the federal government, the provincial governments, and Islamabad capital territory, all of whom were represented before us, concurred. This court held that, inverted commas begin, no one should now put forward any pretext to derail democracy, inverted commas closed, bracket mein kar dein, paragraph 18 of the said judgment, bracket close. Full stop. The Learned Council submits that to enable elections to be held, to ensure elections are held on 8th of February, the certain number of days are required to do the different acts which the law requires prior to the holding of the said elections. And the passing of the impugned order at the 11th hour, if it remains in the field, would make the holding of elections on 8th February, would not permit the holding of elections on 8th February 2024. Full stop. It is further stated that the ECP had drafted the schedule for elections. What do you call it? Program for election. Election program. What is it? Under which section? 57 program. Had drafted the election program, capital E, capital P, which it was intending to announce today. But the passing of the impugned order has made this, passing of the impugned order, that if the impugned order is sustained, this will not be possible, as without having district returning officers and assistant returning officers, election cannot be held. First off, he further states that the learned judge acted in undue, that the learned judge has effectively decided the petition. That there is an inherent contradiction in the impugned order, because where is the impugned order page? Page 10, my lord. Because in paragraph 7, he states that this file states, inverted commas begin, to place this file before the Honorable HON''BLE, Chief Justice for the Constitution of a larger bench, capital L, capital B, inverted commas closed. And at the same time, in the successive paragraph 8, he suspends four notifications issued by the ECP, particulars whereof are as under. ये numbers ले लीजिएगा, उसके लिख दीजिएगा. My lord, actually, please sit down. Who are you? You are dictating an order. Please sit down. Seems to be no respect for anybody anymore.
Next time you do it, we'll hold you in contempt. Who are you, a lawyer? Where have you studied? Please go and sit at the back. I don't know what's happening, what sort of education is being imparted. Supreme Court is dictating an order and she comes and stands up. Is she with you? She's not an advocate of this court, shouldn't have addressed the court. I don't know. Is she with you? No, we don't know. Which respectively appointed 8 returning officers for the seats reserved for women and non-Muslims, 144 district returning officers for elections to the National Assembly and Provincial Assemblies, 266 returning officers and assistant returning officers. ये भी National Assembly and Provincial Assembly for elections to the National and Provincial Assemblies, and 593. ये क्या चीज़ है? 260 national कर दें और 593 returning officer and assistant for provincial assemblies for elections to the provincial assemblies. As such, altogether 1,011 district returning officers and returning officers have been have stopped working off kar dein. Their working has been stopped with the stroke of a pen by the learned single judge. The learned single judge also did not fail to appreciate that the officers that had been appointed were to perform functions throughout Pakistan, and in passing the impugned order, the learned judge acted well beyond the territorial jurisdiction of the High Court. Full stop. As if this was not enough, the very opening words of Article 199 were disregarded by the learned judge, insofar as it stipulates that when there's an alternate adequate remedy available to the petitioner, the same should be availed of first. We are informed that Section 55, subsection 3 was such a remedy. If the petitioner had a grievance against any particular returning officer or officers, we inquired from the petitioners whether any application was submitted before the ECP under Section 55(3). That is availing of the alternate adequate remedy, and we were told that this was not done. The petitioner states that he is an office holder of the very same political party, that is PTI, which was before this court when the said judgment was passed, wherein
no such concern as expressed in the petition filed before the High Court was stated. Full stop. The petitioner also claims to be a barrister and as such is expected not only to be well conversant with the Constitution and the laws of Pakistan, but to have read the judgment of this court, which had clearly stipulated that any attempt to derail democracy would, what is the line exactly? Where was our judgment? 224? Lord, it's at page 231, paragraph 18 at page 231, the last line of paragraph 18 at page 231. That no one would, no one should be allowed to, on any pretext, to derail democracy. Full stop. One individual. As, however, one individual appears to have done just that. And it is indeed a matter of considerable regret that he claims to belong to a political party. And has served in such political party. And we are told that he served as an additional advocate general when the said political party was in government. Full stop. We, in view of the conduct of the petitioner, we call upon him to submit an explanation why action for contempt of court should not be initiated against him for judicial contempt. My Lord, it should be, it would be civil contempt, my Lord, this disregarding of the court order under section क्या उसको कहते हैं? नहीं, for contempt लिख देते हैं वो. For under the contempt order. Under the contempt of court ordinance, 2003, read with Article 204 of the Constitution. Full stop. Full stop. The learned judge, acting in undue haste and at the 11th hour, that we saw the list, that the learned counsel went through the list of returning officers appointed pursuant to the 4 notifications and stated that they were all, that in one of these notifications pertains to the officers of the ECP, whereas the remaining 3 are all serving government servants who already were holding their respective positions and have not been put in place for the purpose of this election or on anyone's behest. Full stop. The petitioner before the High Court also, learned counsel further states that the that initially the ECP had pursuant to section 51, pursuant to 50 subsection 1 clause C and 51(1). And 51 within bracket 1, written to the Chief Justices
of the 5 high courts and requested them to provide judicial officers for the upcoming elections, and not a single one of the Chief Justices agreed to do so. He has referred to a letter issued by the Lahore High Court, which specifically stated that वो लेटर किस पेज पे था? हेलो 211 to 10 से 211 210 in 2010. 6th of February नहीं वो आपका नहीं with the reply 210. reply 210 to 211 emphatic reply was given that no judicial officers can be spared because there are over 1.3 million cases requiring adjudication, Approximately. about 1.3 million cases requiring adjudication, and delaying and provision of such officers would result in the tendency to increase and of which the ultimate sufferers would be the litigants. Full stop. Under such circumstances, for the petitioner to insist on judicial officers to be provided would effectively mean that a writ be issued against the High Court, which is not permissible under Article 199. Clause 5, Clause sir. 5 199 clause 5, sir. But this is the Chief Justice. And in this regard, place his reliance upon the case of Gul Tez Khan Marwat. बोलते आसान यही है ना? You have to come to the Supreme Court. And versus Registrar Peshawar High Court, PLD 2021, Supreme Court 391, which was a judgment by a farm member bench of this court. इसमें हमने क्या किया था? हाँ? That becomes a wonderful thing. The only remedy in such a case, according to this judgment, is to approach this. approach this court And it was held therein that since the only remedy, that if at all there was any remedy, it would be to approach the Supreme Court of Pakistan, which judgment appears to have also been disregarded both by the petitioner as well as the learned judge who passed, the learned single judge. Full stop. Under the circumstances, it would be appropriate to we hereby direct that What's the number of the petition? The High Court petition, it's rate petition number 80828/2023 be what? Yes, Be called from that the High Court should not take any further proceedings in WP number 80828/2023, and the same be placed before and the same be sent to the Supreme Court, and if it is deemed necessary, this court will fix it for hearing. Has been placed before. Before this court, full stop. In view of the fact, ordinarily,
this court does not pass, it does not suspend orders without issuing of notice, but in view of the fact, but in view of the fact that the impugned order has come into direct conflict with the judgment of this court, and as the petition as filed appears not to be maintainable, we are doing so. Full stop. The impugned order also comes in the way of the Election Commission to proceed with its duties and responsibilities, constitutional duties and responsibilities for the holding of elections as mandated under the Constitution. What can we refer? शेड्यूल का ये without further delay, order में suspend कर दिया ना? कर दिया लिखा है हाँ, accordingly impugned in the given circumstances and considering the constitutional and legal stipulations and the judgments of this court, the impugned order is hereby suspended and full stop. The Election Commission we are informed that the Election Commission had prepared the election program which was supposed to be issued today, and in view of the impugned order it had not done so. However, since the impugned order has now been suspended, the Election Commission shall issue the election program today. Today, tonight, kya? Today? प्लीज अभी 3 घंटे As we please, or as the law mandates. You should be saying that आपने ही करना है ना. ये नहीं करना तो बता दें. we are all ready sir, as per your directions. हम तो नहीं कहेंगे, हम आपसे अपना काम करवाएंगे. या आपके हमें काम करना नहीं आता है. जो आप कहें, हम कभी किसी को नहीं कहेंगे, उससे काम करवाएंगे उसका. Without fail, we will issue the election program without fail. The undertaking is given on behalf of the Election Commission that the election program will be issued today. सुन लिया आपने? और वो भी कि वो जो आपने इन व्यू ऑफ नोटिफिकेशन किया था 12 बजे उसको भी आज विड्रॉ कीजिए, वरना तो नहीं चल सकेगा ना. वो विड्रॉ वो नोटिफिकेशन कहाँ है? The notification of the election a notification issued by the Election Commission of Pakistan pursuant to the impugned order of the High Court is also suspended. नहीं वो आप करेंगे नहीं. We don't want to be. Election Commission of Pakistan states that since the impugned order has been suspended, it will be ECP will be withdrawing the क्या नाम है उसका notification dated 14/12/2023 का कोई नंबर भी है? नंबर बता दे. नंबर Notification number F2 of ये page 234 पे लगा. 35. अच्छा तो हाँ 34 and 35. 34. 34 and 35. इलेक्शन 34 and 35. नहीं ये नहीं है 234 पे 234 पे ये नंबर लिख देना, इसका नंबर शंबर और डेट भी लिख दीजिएगा. दोनों नेक्स्ट पेज पे भी है. नाउ 235 पे भी है दोनों. सेम डेट, इवन डेट. तो
इसमें नोटिस किसको करें हम? 234 ये वाला Notice to the respondent. एंड पेज 235 दोनों पे लिखिए। दोनों पे नोटिस हम किसको करें? ऑल द अरे बाकी को क्या करने की जरूरत है? Respondent number 1. Respondent number 1. वही पिटिशनर था ना। इशू नोटिस टू let notice of this petition be issued to the petitioner before the High Court, that is respondent number 1 herein. सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला जारी हुआ था उसे मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन 3 घंटे में resume the training on Monday onwards. This is what the Learned Secretary is saying. Because you You have tomorrow. Why are you missing out tomorrow? May I just submit? No, please don't. Just do the law, abide by the law, hold Sir, may I election. just submit if you allow me, sir? So it's a huge logistical exercise. All the DROs, ROs will have to be brought to the venues. पता The है। venues have been cancelled. We have to, just the delay of. नहीं हमें देखें, Monday का सिर्फ हम शुरू. हम कुछ नहीं लिखेंगे। Sir, हम ना कल का लिखेंगे ना मंडे का लिखेंगे। sir. आपका जो काम है आप करो। जी करेंगे. आप देखिए हम आपको माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे। Thank you very much. हम मोटी मोटी बात करेंगे। आपने कहा जी हम इलेक्शन करना चाहते हैं 8 को। जी इंशाल्लाह. हमने तो नहीं कहा, आपने कहा है ना। आप और सदर साहब ने मिलकर के तयन कर लिया कि 8 फरवरी को करना है। हमने कहा आपको इलेक्शन 8 को करें। हमने आपको कहा क्या? ठीक है, जब आपने ये काम कर लिया, जो भी चीजें वहां तक जाने के लिए करने को हैं वो आप करें। कल को आप कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया और हम ये नहीं कर सके तो वो नहीं कर सके। भाई जो कुछ करना है करें। अब आपके सामने एक मसला था, रुकावट थी, वो रुकावट और वो मसला हमने दूर कर दिया। अब आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे और अगर इजाजत दें तो मैं फिर छुट्टी पे जा सकता हूँ। My lord, just Have a great vacation, sir. just detaining you for 30 seconds. Notice may also be issued to the federal. Oh yes, a notice be also issued to the federation of to respondent number 5, my lord. 5, as well as notice under our provincial order 27A of the Code of Civil Procedure 1908 to the Attorney General, Advocate General को भी करने हैं, and the Advocate Generals of the 4 provinces. इस्लामाबाद का कौन होता है? होते हैं, but Advocate General कहते हैं federal law है तो वो and the Islamabad Capital Territory. चलिए. Anything else, gentlemen? you've lied. Apologies once again for. No, it's not your doing. You are before us, but we must at least. I must compliment you for being so thorough in a very short period of time, and which is always a pleasure to have counsel who are ready with their case, particularly at such. लाहौर हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा तो दरख्वास्त पर कार्रवाई करेगी। And also, my lord may also wish to grant the leave and then the leave may also be granted because it's a CPLA, so a leave has to be granted. Okay. The points, points. Now you can see I'm very tired. The points raised above, in क्या होता है? Leave is granted to consider, amongst others, the noted points. notice Thank you. सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन 3 घंटे में इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं।
लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त नाकाबिल समात है। लाहौर हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोका है। लाहौर हाई कोर्ट के 13 दिसंबर के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस करने वालों को हाई कोर्ट में फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 50 और 51 गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई थी। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन ने अदालती हिदायत पर 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। तमाम फरीकैन 8 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।
गार्डनर्स क्या ही होएगा। जनाब ऑडियो चेक 1 2 3। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। आरओज और डीआरओ से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। पीटीआई के दरखास्त गुजार उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन एक शख्स ने ऐसी कोशिश की। हुक्मनामे के मुताबिक जज लाहौर हाईकोर्ट ने गैर मामूली उजलत में फैसला दिया। जज के हुक्म से इलेक्शन कमीशन का पूरे पाकिस्तान में अमल रुक गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली मिसकंडक्ट है। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया। जज ने सिर्फ पंजाब नहीं पूरे मुल्क का फैसला कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सख्त रिमार्क्स। कहा दरख्वास्त आई लग भी गई। हुक्म इम्तना देने वाला जज ही लार्जर बेंच का सरबराह बन गया। फैसला देने वाले जज को कह दें वो खुद इलेक्शन करा लें।
हाईकोर्ट अपनी ही अदालत के खिलाफ रिट कैसे जारी कर सकती है? हैरान हूं, अदलिया से ऐसे ऑर्डर पास हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अफसरान और डिप्टी कमिश्नर्स भी इंतखाबात ना कराएं तो कौन कराएगा? दरखास्त गुजार उमैर नियाजी कौन है? चीफ जस्टिस का सवाल। दरखास्त गुजार उमैर नियाजी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इलेक्शन कमीशन वकील का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, एक दरखास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोक दें। दरखास्त गुजार जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हम सब कानून और आइन के पाबंद हैं। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर। एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई इंतखाबात से फरार चाहती है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, चीफ जस्टिस कह चुके इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इंतजामिया इलेक्शन नहीं कराएगी तो क्या खलाई मखलूक कराएगी? क्या इलेक्शन कमीशन का किरदार सुप्रीम कोर्ट को अदा करना पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन ताखीर का शिकार होंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को यकीन। गार्डन टाउन चौक में लाहौर ब्रिज की तर्ज पर नया पुल बनाने का ऐलान। कहा, स्मोक के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। मसनूई बारिश के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। थोड़े बादल चाहिए जो अभी नहीं है। यहाँ ब्रिज बना रहे हैं जो लाहौर ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा। लाहौर ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा तो आप फिरोजपुर रोड से एक नया रास्ता निकल आएगा इस पूरे इलाके के लिए। हमारे पास एक्चुअली पाकिस्तान में वो स्टडी मौजूद नहीं है कि स्मॉग एक्चुअली है क्यों और किस वजह से है। जो फसलों को जला रहे हैं, स्मॉग तो आज भी है। मेरे समेत सब शोर मचाते रहिए तो फसलों की वजह से हुआ है। हाँ, ट्रैफिक का इशू है, बाकी सारे इशू हैं। अगर फसल जल रही है उसकी वजह से कितनी है, ट्रैफिक की वजह से कितनी है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डीजी ISI फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को भी नोटिस जारी। साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे भी शामिल। आप कहते हैं फैज हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए। जनरल बाजवा पर बराह रास्त इल्जाम ही नहीं है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने ज्यादा नाम फैज हमीद का लिया। जनरल बाजवा ने शौकत सिद्दीकी से बराह रास्त बात नहीं की थी। चीफ जस्टिस का वकील हामिद खान से मुकालमा। कहा, साबिक आर्मी चीफ से कड़ी नहीं जुड़ रही। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में इलेक्शन 2018 पर भी बहस। चीफ जस्टिस ने कहा कि शौकत सिद्दीकी 2 जनरल्स को फरीक बना रहे हैं। वो जनरल्स तो बरसरे इक़्तिदार नहीं आना चाह रहे थे। वो जिनके सहूलतकार बनना चाह रहे थे वो कौन थे? सहूलतकारों को फरीक बना लिया, फ़ायदा उठाने वालों को क्यों नहीं? वकील हामिद खान ने बताया कि फैज़ हमीद चाहते थे इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप खुद मामला इलेक्शन 2018 तक ले आए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। आर्मी चीफ की अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए 2 तरफा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। जनरल आसिम मुनीर का इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की अहमियत पर भी जोर। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मौक़िफ़ भी दोहराया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। कोई अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ना होगा। आज़ाद कश्मीर में यूनिवर्सिटी तलबा से खिताब में कहा, पाकिस्तान हर किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार है। हमें कश्मीर की फाइनल सेटलमेंट पर तवज्जो रखनी चाहिए। टांग पुलिस लाइंस पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश बमबार समेत तमाम 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 3 पुलिस एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हैं। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 180 फलस्तीनी शहीद कर दिए।
गजा में शहादतें 19,000 के करीब पहुंच गईं। जख्मियों की तादाद 55,000 से तजावुज़। शुहदा में फ़लस्तीन के 55 फुटबॉलर्स समेत 85 एथलीट्स भी शामिल। हमास की भरपूर मज़ाहमत, इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। पर्थ टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 132 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने टीम को 74 रन का आगाज फराहम किया। अब्दुल्ला शफीक 42 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान शान मसूद 30 रन बना सके। खेल खत्म हुआ तो इमामुल हक 38 और नाइट वॉचमैन खुरम शहजाद 7 रन के साथ विकेट पर मौजूद थे। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के पहले इनिंग्स की सबकत खत्म करने के लिए मजीद 355 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 487 रन बनाए। Then Mitchell Stark with a similar delivery. He had 4. Then he had Pat Cummins nicking the slip. Salman Sticky at first, and Nathan Lyon to complete his 6. Salman again. That's a good bag on debut. शाबाश आमिर जमाल, शाबाश। पहले ही मैच में 6 शिकार कर लिए। आमिर जमाल डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले 14वें पाकिस्तानी बॉलर बन गए। ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। आरिफ भट्ट ने 1964 में मेलबर्न में यह कारनामा सरअंजाम दिया था। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। वजीर आला मोहसिन नकवी का रसोली की निशानदही करने वाले ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टर का मुआयना। सर्जिकल टावर डॉक्टर फैसल मसूद के नाम से मंसूब करने का ऐलान। फारिगुल तहसील डॉक्टर्स को शील्ड्स दी। मोहसिन नकवी ने कहा, डॉक्टर्स का शोबा इबादत का शोबा है, जितनी कदर करेंगे कम है। 31 जनवरी तक अस्पतालों की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर लेंगे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल की रेनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं। जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम पूरा कर रहे हैं। चाहे आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, चाहे म्यू हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स हैं। हमारी तो ख्वाहिश है कि सारे बड़े हॉस्पिटल जो 8-10 हॉस्पिटल सारे के सारे ऐसे हो जाएं, और हम उसके लिए छोटी सी एफर्ट कर रहे हैं। 6 मिलियन स्क्वायर फीट की रीवैम्पिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, जो मुझे बड़ी उम्मीद है कि 31 जनवरी तक हम ख़त्म कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक तदारुक केस में बड़ा हुक्मनामा। प्राइवेट दफातर को 2 रोज के लिए वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सरकारी दफातर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वो भी करें। किसी को नहीं कहा कारोबार बंद कर दें। सील होने वाले कैफेज के मालिकान मंगल तक बयान हल्फी जमा करवाएं, फिर देखेंगे। मजीद समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। Just a single. Are they going to get a second here? They're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. And all of Pakistan will celebrate, as will these 2 young men out there. There are ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच न्यूयॉर्क में कराने पर इत्तेफाक। पाक भारत क्रिकेट मैच अमेरिका में होगा। अमेरिकी शहर फ्लोरिडा और टेक्सास भी वर्ल्ड कप मुकाबलों के मेजबान होंगे। फाइनल की मेजबानी बारबाडोस करेगा। जी बेहतर, सुन लिया ना। अल्लाह मालिक है। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा काशा और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि इलेक्शन कमीशन 3 घंटे में इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरखास्त नाकाबिले समात है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया और लाहौर हाई कोर्ट आरओ डीआरओ से मुतालिक दरखास्त पर मजीद कार्रवाई न करे। क्यों ना दरखास्त गुजार उमैर